Hello everyone, I am Ritika Jujgar, Assistant Professor IT Department. So in the course of Artificial Intelligence, we discuss about Unit 3. Okay. So Unit 3 is based on knowledge representation and reasoning. So in previous video we discuss about what is mean by knowledge representation and types of knowledge. Okay. So in this video we are going to discuss about what are the techniques of knowledge representation. So let us discuss here. So there are mainly 4 ways of knowledge representations which are given as follows. First is a logical representation, second one is the semantic network representation, then frame representation and the production rules. Okay, so let us discuss these representations one by one. So first is a logical representation. So logical representation is a language with some concrete rules which deals with the propositions and has no ambiguity in the representation. Ambiguity means what? Okay, if you are having some sentence, so this particular sentence not containing the ambiguity means जो भी पर्टिकुलर सेंटेंस है उसके अंदर एरर्स नहीं होने चाहिए, उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए. एम्बिग्विटी मीन्स व्हाट? नो. अनएम्बिग्विटी मीन्स व्हाट? जो भी उसका मीनिंग है वो क्लियर होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, मीन्स सर्टनिटी होनी चाहिए उसके अंदर. ओके, सो द लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन इज अ लैंग्वेज विच सम कंक्रीट रूल्स विच डील्स विद द प्रपोजिशन लॉजिक and has no ambiguity in the representation. उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए. ambiguity means what? non clear. so no ambiguity means what? जो भी मीनिंग होगा, सेंटेंस होगा हमारे पास, जो भी नॉलेज होगा वो उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए. so it has a no ambiguity in the representation. so logical representation means drawing a conclusion based on the various conditions. Okay, we are having some statements. So based on the statements we have to provide some conclusion based on the various conditions. Okay, so this representation lies down some important communication rules. So it consists of precisely defined syntax and semantics which supports the sound inference. Okay, so each sentence can be translated into the logics using the syntax and semantic. Okay, अगर कोई भी हमारे पास सेंटेंस है उसका अगर हमें कंक्लूजन निकालना है या फिर उसको हमें रिप्रेजेंट करना है प्रॉपरली, सो वो जो सेंटेंस है उसके अंदर एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, मीन्स उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए. ओके, सो जो भी हमारे पास सेंटेंस है वो 2 फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं. एक तो उसका सिंटैक्टिकली मीनिंग चेक करना चाहिए एंड सिमेंटिकली उसका मीनिंग भी हमें चेक करना चाहिए. सो सिंटैक्स मीन्स व्हाट? सिंटैक्सेस आर द रूल्स विच डिसाइड हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट द लीगल सेंटेंसेस इन द लॉजिक. So these syntaxes are determines which symbols we can use in the knowledge representation. ओके, कोई भी सेंटेंस को अगर नॉलेज के अंदर हमें रिप्रेजेंट करना है, सो कौन से सिंटैक्टिकली सिम्बॉल्स हमें यूज़ करनी चाहिए ये हमें पता होना चाहिए, एंड हाउ टू राइट दो सिम्बॉल्स, और उस सिम्बॉल्स को हमें कैसे राइट करना है ये भी हमें पता होना चाहिए. ओके, and the next thing is the semantics. What is mean by semantics here? So semantics are the rules by which we can interpret the sentence in the logic. Okay, किस तरह से हम इंटरप्रेट करेंगे हमारे सेंटेंस को. so this is all about the semantics. so semantics are also involves assigning the meaning to each sentence. एक सेंटेंस है हमारे पास, उसको अगर हम हमारे सिंटैक्स चेक करना है, उसके सिम्बॉल्स अगर हमें चेक करना है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिंटैक्टिकल. एंड जो भी हमारे पास सेंटेंस है उसका मीनिंग अगर हमें चेक करना है, ओके, मीनिंग क्लियर है क्या वो अगर हमें चेक करना है, सो दिस इज़ अ सिमेंटिकली. ओके, so logical representations can be categorized into the mainly 2 logics. First is the proposition logic and the predicate logic. Okay, so in the next lecture we discuss about what is mean by we are going to discussing about the what is mean by proposition logic, how we use this proposition logics, examples of proposition logic also, and the predicate logics also. Okay, so in this video we are going to only discussing about the techniques of knowledge representation. Okay, so these things we discuss
in details in the next videos. So what are the advantages and disadvantages of this logical representation, and when we use this logical representation? So advantages of logical representations are we can enable us to do the logical reasoning. ओके लॉजिकली हम थिंक करेंगे. कोई भी सेंटेंस अगर हमारे पास आता है, अगर ह्यूमन को कोई भी हम सेंटेंस प्रोवाइड करते हैं तो हम उसको लॉजिकली थिंक करते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा. सेम हमें क्या करना है, ह्यूमन के जैसे मशीन को ट्रेन करना है कि उसके पास जो भी सेंटेंस होगा वो किस तरह से लॉजिकली उसको रिप्रेजेंट करेगा. ओके सो इन द फॉर्म ऑफ प्रपोजिशन लॉजिक और इन द फॉर्म ऑफ प्रेडिकेट लॉजिक. अगर मेरे पास कोई भी एक स्टेटमेंट आता है कि इफ़ द रेन इज़ कम देन द रोड इज़ अ वेट. ओके जब भी रेन होगा, जब भी बारिश होगी, तब हमारा जो भी रोड है वो क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा. ओके सो ये जो सेंटेंस है ये ट्रू है. हमें पता चलेगा इजीली कि अगर कोई भी बारिश वगैरह आती है तो हमारा पूरा जो रोड होता है वो क्या हो जाएगा, हमारा वेट हो जाएगा. ठीक है. सो ये जो स्टेटमेंट है ह्यूमन को इजीली अंडरस्टैंड होता है कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट ट्रू है. अगर कोई भी अनादर स्टेटमेंट अगर मैं कंसिडर करती हूँ कि हॉट आइसक्रीम. ओके सो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ह्यूमन को इजीली पता चलता है कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है. ठीक है. तो लॉजिक हम यहाँ पे लगाते हैं कि जो भी हम स्टेटमेंट हमारे पास आते हैं, सेंटेंसेस हमारे पास आते हैं, वो लॉजिकली करेक्ट है या नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है. ओके सो ह्यूमन ये इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, बट मशीन कैसे अंडरस्टैंड करेगा. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन. सो मशीन को हमें क्या करना है, जो भी उसके पास नॉलेज है उसको हमें रिप्रेजेंट करना है. उसके लिए हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन. ओके so the second advantage is the logical representations is the basis for the programming languages. Programming languages से भी हम इसको represent कर सकते हैं. Okay so this is the first technique of knowledge representation, that is the logical representation. The second technique of knowledge representation is the semantic network representation. So semantic networks are alternative of predicate logics for the knowledge representation. Okay predicate logics का alternative क्या है, यहाँ पे हमारा semantic network representation. So in semantic network representation we can represent our knowledge in the form of a graphical network. So this network consists of nodes representing the objects and arcs which describe the relationship between the objects. Okay so अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स है, उसके बीच में अगर मुझे रिलेशनशिप दिखाना है, सो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगी, आर्क्स. ओके जो कि हमें क्या दिखाएगा, रिलेशनशिप दिखाएगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में. ओके सो सीमेंटिक नेटवर्क कैन कैरेक्टराइज or categorize the object in the different form and can also link those objects. Okay so semantic network are easy to understand and can easily extended. So in the semantic analysis or network representation there are mainly two types of relations, is a relation that is called as the inheritance and the kind of relation. Okay so see here there is one statement. Okay so this is a simple example related to this semantic network representation. So there are some statement which we need to represent in the form of a node and arc. Okay जैसे मैंने यहाँ पे बताया semantic network के अंदर हम यूज़ क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट एंड आर्क से ग्राफिकल नेटवर्क से हम उसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके अगर हमारे पास कोई भी ग्राफिकली डायग्राम आती है सो ह्यूमन इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा उनके बीच में रिलेशन क्या है, कैसे होगा. सो सेम मशीन को हमें क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करना है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करना है इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफिकल. ओके सो अगर हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स है, जेरी इज़ अ कैट, जेरी इज़ अ मैमल, Jerry is owned by Priya, Jerry is brown colored and all the mammals are animals. So we have to represent this statement is in the form of nodes and arcs. Okay so हमारे पास एक स्टेटमेंट कॉमन क्या है, जेरी. ओके सो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एक
नोड क्रिएट किया है जो कि हमारा ऑब्जेक्ट होगा जेरी। जेरी इज़ अ कैट। सो यहाँ पे मैंने इज़ अ रिलेशनशिप बताया कि जेरी इज़ अ कैट। सो जेरी इज़ वन ऑब्जेक्ट एंड कैट इज़ द अनदर ऑब्जेक्ट। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इज़ अ रिलेशनशिप दिखाया। सो इज़ अ रिलेशनशिप। द नेक्स्ट इज जेरी इज़ अ मैमल। ओके, जेरी इज़ अ कैट, जेरी इज़ अ मैमल। ओके, सो अगेन इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन मैमल। तो जो जेरी है वो क्या है, कैट है और वो एक मैमल भी है। So Jerry is owned by the Priya. Jerry is owned by the Priya. So Jerry यहाँ पे है is owned by the Priya. Jerry is a brown color. So जो हमारे पास जेरी है उसका कलर क्या है, ब्राउन कलर। ओके, सो ये भी हमारे पास नोड है। एंड ऑल द मैमल्स आर एनिमल्स। सो मैमल्स है यहाँ पे हमारे पास, ऑल द मैमल्स आर एनिमल। सो इस तरह से हम ग्राफिकली स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ सिमेंटिक नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो यहाँ पे देखो जेरी इज़ अ कैट, यहाँ पे हमने यूज़ किया है इज़ अ रिलेशनशिप। जेरी इज़ अ मैमल, सो यहाँ पे भी होगा इज़ अ। सो जो हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है इसके अंदर हमने क्या यूज़ किया है, वी आर यू रिप्रेजेंटिंग द नो ऑब्जेक्ट्स एंड आर वी डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन दोज ऑब्जेक्ट्स। सो जेरी इज़ ओन्ड बाय, सो यहाँ पे होगा इज़ ओन। owned by, is colored, cherry is a brown color, is colored। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, आर को रिप्रेजेंट किया है। colored and all the mammals are animal। यहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं is a, mammals is a animal। okay, so this is a semantic network representation। so in this diagram we have represented the different types of knowledge in the form of a nodes and arcs। so each object is connected with the another object by some relation। सो ड्रॉबैक्स क्या होंगे सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशंस के अंदर, इन द सिमेंटिक नेटवर्क टेक अ मोर कंप्यूटेशनल टाइम एंड अ रन टाइम as we need to traverse the complete network trees to answer some questions। so it might be possible in the worst case scenario that after traversing the entire tree we find that the solution does not exist in this network। okay, and another drawback is what this type of representations are inadequate as they don't have any equivalent quantifiers for all type, all for some and none type। okay, so semantic network does not have any standard definition for the link the names, and these network are not intelligent and depends on the creator of the system। एंड एडवांटेजेस क्या होंगे अगर हम ये सिमेंटिक नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं तो सिमेंटिक नेटवर्क्स आर अ नेचुरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नॉलेज। सो दिस कन्वे द मीनिंग इन द ट्रांसपेरेंट मैनर एंड दिस नेटवर्क्स आर सिंपल एंड ईजीली
understandable. Okay, so this is a semantic network representation. So the next technique of knowledge representation is a frame representation. So frame is a record-like structures which consist of the collection of attributes and its value to describe an entry in the world. जैसे हम यहाँ पे डायग्रामेटिकली या फिर ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे, सेम हमें फ्रेम रिप्रेजेंटेशंस के अंदर हमें क्या करना है, रिकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में उसको डिस्क्राइब करना है. ओके, so frames are the AI, artificial intelligence data structure, which divides the knowledge into the substructures by representing the situations. Okay, so it consists of the collection of slots. The frame consists of the collection of slots and the slot values. So these slots may be of any type and size. So slots have the names and the values which are called as a फेसेज. जितने भी हमारे पास स्लॉट्स होंगे उसका हमारे पास टाइप होगा और उसकी साइज़ होगी. सो जो भी हमारे पास स्लॉट्स है उस विच कंटेन द नेम्स एंड वैल्यू विच इज़ कॉल्ड एज अ फेसेट्स. So the facets is the various aspect of the slots is known as the facets. So the facets are features of the frames which enables us to put the constraints on the frame. Constraint means what? We have to providing some rules on that frame. Okay, constraint means what? Providing some rules and regulations on that particular frame. So example, if needed, facts are called when the data of any particular slot is needed. Okay, if needed, facts are called when data of any particular slot is needed. If you are having the slot is needed, we are using the constraint here, the if needed. So the frame may consist of any number of slots and the slot may include any number of facets and the facets may have any number of values. So the frame is also known as a slot filter knowledge representation in the artificial intelligence. So these frames are derived from semantic network and later involved in our modern day classes and objects. So the single frame is not much useful. So frame system consists of a collection of frames which are connected. So in the frame, the knowledge about an object or event can be stored together in the knowledge base, and the frame is a type of technology which is widely used in various applications like natural language processing and the machine vision also. Okay, so see here there is one example related to the frame representation. So here let us take an example of a frame for a book. So we are having the slots like title, generation, author, edition, year and pages, and the filters are artificial intelligence is a title, generation is a computer science, author is a Peter Norvig, edition is a third edition, year is a 1996 and page is a 1152. Okay, so this is a frame representation. So what are the advantages of this frame representation? The frame knowledge representation makes the programming easier by grouping the related data. This frame representation is comparatively flexible and used by many applications in artificial intelligence. So it is very easy to add the slots for the new attribute and the relation, and it is easy to include the default data and to search for missing values, and the last representation is easy to understand and visualize. And what are the disadvantages of this frame representation? So in the frame system, inference mechanism is not be easily proceed. Inference mechanism cannot be smoothly proceeded by the frame representation, and the frame representation has a much generalized approaches. Okay, so this is all about the frame representation. So the last technique of knowledge representation is the production rule. So production rules
system consists of conditions and action pair, which means if condition then action. अगर पर्टिकुलर कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है देन हम वो एक्शन परफॉर्म करेंगे, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो हम एक्शन को परफॉर्म नहीं करेंगे. सो दिस इज़ अ प्रोडक्शन रूल. So these production rules mainly contain the three parts. First is the set of production rule, the second thing is the working memory, and third thing is the recognize the act cycle. So in the production rule, agent checks for the condition. If the condition exists, then production rule fires and corresponding action is carried out. So this condition part of a rule, okay, so this condition part of the rule determine which rule may be applied to a problem, and the action part carries out the associated problem solving steps. So this complete process is called as a recognize act cycle. So the working memory contain the description of the current state of the problem solving, and rule can write knowledge to the working memory. So this knowledge match and may fire other rules. Okay, and if there is a new situation which is called as a state situation generate, that means state generate, then the multiple production rules will be fired together. So this is called as a set of production rule. So if there is a new situation generates, then the multiple production rules will be fired together. So this called the conflict set. Okay, so in this situation the agent needs to select the rule from these sets, and it is called as a conflict resolution. Okay, so these are the mainly three parts of the production rule. First is the set of production rule, second one is the working memory, and third one is the recognize the act cycle. Okay, so see here there is different examples of production rule. If at bus stop and bus arrives, then action get into the bus. Okay, if this condition is satisfied, as I said here, the production rule containing some conditions and action. So if we are having this condition, then we are performing this action. Okay, if at bus stop and bus arrives, then action get into the bus. The second statement is if on the bus and paid and empty seat, then action is a sit down. If on bus and unpaid, okay, then action is what? Pay charges. If the bus arrives at a destination, then action is what? Get down from the bus. So these are the production rules. Depending on the conditions, action will be performed here. Okay, so what are the advantages of production rule? The production rules are expressed in the natural language. Okay, we are expressing this production rule in the natural languages, and the production rules are highly modular, so we can easily remove, add or modify an individual rules. Okay, so these are the advantages of this production rule. And the disadvantage of production rule is what? The production rule system does not exhibit any learning capabilities, as it does not store the result of the problem for the future uses. And the disadvantages of production rule is during the execution of the program, many rules may be active. May be active. Hence, the rule-based production systems are inefficient. Okay, so these are the disadvantages of the production rule. So see here, there are different techniques of knowledge representations we are discussed here. The first is a logical representation, second one is the semantic network representation, third one is the frame representation, and the last one is the production rule. Okay, so these are the different techniques of knowledge representation. Thank you.